एक बड़ी पूरे वर्ल्ड कप को लेके, भारत पाकिस्तान के मैच को लेके एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, पॉलिटिकल एंगल भी इसके अंदर है काफी सारा। हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते में और स्पेशली 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट हुई वो सब हम लोगों ने देखे। ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड सब लोगों ने अपने अपने एनालिसिस शेयर किए और एक्सपर्ट्स ने अपने व्यूज शेयर किए, विच इज फाइन। पर ये बात तो काफी हद तक क्लियर थी कि कुछ न कुछ जैसा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत पाकिस्तान की मैच को लेके हुआ था, वैसा वर्ल्ड कप में भी कुछ न कुछ होगा। तो आईसीसी ने पहले ही एक न्यूट्रल वेन्यू और वो सारी चीजें अरेंजमेंट करके रखी थी। अब जब ये बांग्लादेश वाला इशू सामने आया और बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर किया, तो उस वक्त इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अभी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि वहाँ के होम मिनिस्टर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी इनडायरेक्टली एक धमकी दे दी थी कि 21 टीमें बुला ली है तो 22वीं टीम भी बुला ली। दैट मीन्स दे कैन टेक देयर नेम बैक फ्रॉम दी वर्ल्ड कप। एक ही इनडायरेक्ट मैसेज उन्होंने आईसीसी को दे दिया था। अब उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्म करवाया है वर्ल्ड को। आई एम नॉट श्योर ये ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से आईसीसी को गया है या नहीं गया है। नो, नहीं गया है। राइट, कि पाकिस्तान जो है वो 15 तारीख को भारत के अगेंस्ट फील्ड पर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज अलाउड और क्लियर्ड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप, but they will not take field on 15th of February मैच अगेंस्ट इंडिया। ये वर्ड और शब्दों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा नपातुला यूज किया गया है उस ट्वीट के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया है। बड़ा ही डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेम इसको किया गया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ से क्या वाकई, क्योंकि आईसीसी ने भी जो उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करी है, वो भी आई एम श्योर आपने देखा होगा कि वो भी बड़ी नपी तुली प्रेस रिलीज जारी करी है। उन्होंने एक तरफ तो पाकिस्तान को पोलाइटली कहा भी है कि भाई आप कंसिडर करें अपना डिसीजन, और दूसरी तरफ उसी प्रेस रिलीज के अंदर उनको एक पोलाइट धमकी भी दे दी है कि इसके बाद क्या होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए व्हाट्स योर व्यू कि क्या किस तरफ ये ऊट बैठेगा? There is a good chance the game will actually go through, Rahul. It can happen. The reason ये सब इतने न्यूआंस स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके बाद इतना ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रहा है, is because there are back channel talks going on, backroom talks going on to see if we can have this game. Because मैं यही कहूँगा कि firstly let's look at the issue, right? बहुत लोगों ने कहा था कि 1996 में ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इट वाज, हु बॉयकॉटेड गोइंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, राइट? वेस्ट इंडीज था, राइट? आई रिमेंबर देयर वर टू कंट्रीज हु बॉयकॉटेड। फिर आई थिंक कोई और साल था 2003 या सम ईयर जहां पे आई थिंक इंग्लैंड और समबडी सेड वी विल नॉट गो टू जिम्बाब्वे, राइट? एंड दे डिडंट प्ले द गेम। तो लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड कि वैसे ही तो पाकिस्तान ने बताया करके ना, देयर इज अ बिग डिफरेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो दोनों सिनेरियो में दोनों कंट्रीज की अग्रीमेंट थी, in the sense what I mean to say is that there was a very clear message that we don't want to go to that particular country. So what I mean here is Australia said we will not come to, I think, Sri Lanka, if I remember correctly, right, in 1996, right, because of security concerns. But ये scenario वैसे नहीं है। यहाँ पे Pakistan is going to Sri Lanka. They are playing all their games in Sri Lanka, तो security issue नहीं है वहाँ पे, right? So it is not comparable to that 1996 वाली सिनेरियो या जो 2003 वाली सिनेरियो जहां पे इंग्लैंड ने कहा था कि यार we don't have any diplomatic ties with Zimbabwe, which means that we cannot send our team to Zimbabwe because of reasons not cricket but political, right? But that the scenario was not कि England didn't play Zimbabwe in Zimbabwe but they played, say, South Africa in Zimbabwe. That is not the scenario, right? It's not like Australia didn't play Sri Lanka in Sri Lanka but decided to go to Sri Lanka and play India. That was not the scenario. So first of all ये scenario same नहीं है, right? दूसरी चीज, जब 96 में हुआ था या 2003 में हुआ था, दोनों सिनेरियो में it was a decision taken by the host board, right? That we will not go and play. ये सिनेरियो में आईसीसी ने ऑलरेडी प्री एग्रीमेंट एक करके रखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी मैचेस होंगे वो एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा,
right? So just like the Champions Trophy, jab India didn't travel and Pakistan came to Dubai to play, India is traveling to Colombo to play Pakistan, and Pakistan are not traveling anywhere. They are playing in Colombo. तो ये ऑलरेडी एक प्रीसेट एग्रीमेंट है. तीसरी बात, जब तक बांग्लादेश की वाली इशू नहीं आई थी, किसी ने सिक्योरिटी के बारे में नहीं कहा. ना बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न लिखा ले, ना पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, राइट? तो ये तीनों सिनारियो में डेफिनेटली इट इज a decision that has been taken because of whatever has happened at that particular time, right? जब Bangladesh was removed from the World Cup for whatever reason, it's a decision that has been taken on the basis of that thing, right? Whatever the event happened and they have decided. So it is not a security concern. It is not a concern कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, because अगर इंडिया के खिलाफ आप नहीं खेलोगे तो आपने अभी 2 या 3 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, तो तभी तो आपने खेला था, यू प्लेड इंडिया. नो, मेरी यही सवाल होगी उनको. ठीक है, आपने डिसाइड किया, दिस इज द गवर्नमेंट दैट हैज आस्क्ड देम टू डू इट, ओके फाइन, ओके, आपने इंडिया के साथ नहीं खेला 15 तारीख वाली मैच, ग्रेट. व्हाट हैपेंस इफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ प्लेइंग द नॉकआउट गेम? तो आप ये कहोगे कि आप नॉकआउट गेम फोरफिट कर दोगे. कल मान लीजिएगा इंडिया इज इन ग्रुप ए इन द सुपर 8, पाकिस्तान इज इन ग्रुप बी आई थिंक ऑफ सुपर 8, राइट? तो हो सकता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सेमीफाइनल हो, right? Pakistan qualify from their group, India qualify from their group. India is, say, let's say 1, Pakistan is 2 in that group. Whatever that is, India play Pakistan in a semi-final. Or let us say that India and Pakistan make it to the final. तब आप क्या करोगे? आप वही व्यू लोगे कि नहीं, हमने इंडिया को 15 तारीख को नहीं खेला था for whatever reason, तो हम फाइनल भी नहीं खेलेंगे. We will gift the tournament to India. या हम सेमीफाइनल को फोरफिट कर देंगे. अगर आपको याद है तो लेजेंड्स वाली गेम में आई थिंक इंडिया ने अपनी सेमीफाइनल में कुछ तो फोरफिट कर दिया था, राइट? पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द फाइनल बाय डिफॉल्ट बिकॉज इंडिया डिडंट प्ले दैट लेजेंड्स वाली गेम. That means, are we saying that Pakistan is going to take the decision and say, okay, fine, we will not play if it's a semi-final? Or if you play the semi-final, then what are you saying to say कि भाई ये रीजन उन्होंने इसके लिए 15 तारीख की मैच बोला है, ये मैं आपको पहले वाले पॉइंट में लेके जाऊंगा. बिकॉज ये जो टूर्नामेंट है इसमें उन्होंने इस तरह की रूल्स रखे हैं कि वो जो फर्स्ट वाली मैचेस हैं उसकी कोई भी इम्पैक्ट सुपर 8 के लिए नहीं होगा. दैट्स व्हाई व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक आई टोल्ड यू अबाउट दैट, बिकॉज व्हेन यू कम टू दिस टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज बीन डन. अगर मैं 15 तारीख वाली मैच नहीं खेलूंगा तो पाकिस्तान को टेक्निकली पॉइंट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. उनकी अगर वो क्वालिफाई कर गए, स्टैंडिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. सुपर 8 की स्टैंडिंग में भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर प्री सीडेड, लाइक आई टोल्ड यू, राइट? सो प्री सीडेड में जो भी पाकिस्तान की सीडिंग थी, राइट, उस सीडिंग के बेसिस पे वो जाएंगे अंदर. तो इट इज अ डिसीजन विच पाकिस्तान नोज दैट इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर टूर्नामेंट. बट हियर इज अ कैच, कोलंबो में काफी बारिश है, राइट? तो ले लीजिए कि आप नेदरलैंड्स के खिलाफ आपकी मैच है, वो गेम रेन्ड आउट हो गई और आपने बता दिया कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे. तो यू आर प्लेइंग, देयर आर 5 टीम्स इन एवरी ग्रुप, मतलब आपके पास 4 गेम है खेलने के लिए. सो द अजम्पशन हियर इज दैट इफ इंडिया के गेम नहीं होने वाला है तो आपकी तो 2 पॉइंट चली गई वहां पे, राइट? तो आपके पास बचते कितने हैं? 3 गेम्स. आपको तीनों गेम को जीतना पड़ेगा सो दैट यू विल बी इन दैट बेस्ट पोजीशन टू क्वालिफाई फ्रॉम दैट ग्रुप, राइट? अगर आपकी 2 मैच रेन आउट हो गई, या समझ लीजिए कि 1 मैच रेन आउट हो गया और हो सकता है कि 1 मैच बहुत ही शॉर्टेंड गेम हो गया, राइट? और उस शॉर्टेंड गेम में आप हार गए एसोसिएट नेशन के साथ. इट्स पॉसिबल. पाकिस्तान हैज लॉस्ट टू एसोसिएट नेशंस, अदर टीम्स हैव लॉस्ट टू एसोसिएट नेशंस. लेट्स नॉट फॉरगेट, बहुत साल पहले इंडिया हैड लॉस्ट टू बांग्लादेश बिफोर बांग्लादेश हैड बिकम अ वेरी बिग टूर्नामेंट, राइट? देयर आर प्रेसिडेंट्स फॉर पीपल लूजिंग. England have lost, there are other teams that have lost to associate nations, right? तो ये सिनारियो में पाकिस्तान have put themselves in a binding situation जहां पे आपकी कोई भी गेम रेन आउट हो गई, या आप worst case you lose to one of the associate nations, the chances of your qualifications become lesser and lesser because आपने already एक गेम कम कर दिया उसमें से. So in reality, whether the decision will benefit Pakistan or not, they will have to hope, and they have to hope that all their remaining 3 games happen properly without any delays, without any other issues, and they don't end up on the wrong side of a day. Because let's say you play the Netherlands. Netherlands is a very good team. It's not a bad team. हो सकता है कि वो दिन में नेदरलैंड्स के सारे तारे
एक ही जगह पे मिले, जैसे आयरलैंड का हुआ था एक बार 2000, यू रिमेंबर राइट? इंडिया इन द 2007 वाली वर्ल्ड कप में, राइट? नोबडी एक्सपेक्टेड कि इंडिया विल लूज टू अ टीम एंड दे लॉस्ट टू श्रीलंका और समथिंग लाइक दैट एंड दे वर नॉट क्वालिफाइंग, राइट? सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप एक एसोसिएट नेशन के साथ हार दो, जैसे पाकिस्तान के साथ लास्ट टूर्नामेंट में हुआ था, राइट? लास्ट टाइम की जो T20 जिम्बाब्वे वर्ल्ड के कप थी, साथ भी हार गए थे और यूएसए के साथ भी हार गए थे। right? They lost to USA, right? When they lost to USA, and then they lost to India as well. Their chances of qualification became very, very less because अब आपके पास वो मौका ही नहीं है. तो it's the same scenario for Pakistan, right? In technicality, they have lost to India because आपने मैच नहीं खेला है, right? Assume कर लेते हैं कि मैच नहीं खेलते हैं वो. So that means you have lost 2 points irrespective of the result. That means you are already -2 when you start the tournament. If you lose to one of the associate nations, then you are gone because now you have only 2 games. And the other team has got 3 games. So Netherlands, if they defeat Pakistan, they have 1 extra game in hand. Now वही हो सकता है कि Netherlands और श्रीलंका वाली गेम रेंड आउट हो गई. Now Netherlands will get 1 point, Sri Lanka will get 1 point, which means Pakistan के पास और भी qualification के लिए chances कम हो जाते हैं. So in short, forgetting all the financial implications and other things that can happen, which we can talk about, it is a loss for Pakistan as a team, and which is not good for them. Because Absolutely. It is not beneficial for them to skip the game. आप ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि वो मैच में पाकिस्तान हार जाएगा, but that's a completely different scenario. आप ये नहीं सोच सकते कि मैच में जाने के पहले कि आप हारोगे कि जीतोगे. Exactly. But आप तो पहले ही बता रहे हो कि मैं नहीं खेलूंगा, तो आपके पास तो वैसे ही -2 पे चल रहे हो ना. पाकिस्तान इज लाइक -2 when they start this tournament. अच्छा अनूप, इसमें ना एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर टॉक्स भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं. तो आई एम श्योर हम लोगों ने भी इसके पहले कौन सा टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ये चीज देखी थी कि पाकिस्तान की टीम होटल में रुकी हुई थी. फिर ये खबर आई कि नहीं, वो होटल में से निकल रहे हैं. फिर थोड़ा मैच स्टार्ट होने में देरी हुई, तो अल्टीमेटली वो मैच हो गया, राइट? वैसे ही कुछ अभी जो इतना 10-15 दिन का समय है, इसके दौरान भी कुछ शायद मान मनोबल की जाए, मनुहार की जाए, फिर मान जाए, correct. ईगो सेटिस्फाई किया जाए कहीं ना कहीं एक दूसरे का. That's what is going to happen because there are lots of implications of this decision, Rahul. पहले तो financially it is a major loss, right? Because firstly, let's be very clear, barring India and to a certain extent Australia, a lot of the teams that play the cricket World Cup and cricket में जो ecosystem में है, they are dependent on ICC for funds. ICC को फंड कहां से आता है? आईसीसी को फंड आता है जब ये टूर्नामेंट होता है, राइट? इस टूर्नामेंट की गेट से उनको पैसा मिलता है. इस टूर्नामेंट की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो उन्होंने बेचा है टू हूएवर, फॉर इंडिया में जियो स्टार है, वर्ल्ड वाइड यू हैव सोल्ड इट टू प्राइम, राइट? एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू विल वॉच इट ओनली ऑन प्राइम. देयर इज नो अदर प्लेस यू कैन वॉच द वर्ल्ड कप, राइट? देयर इज नो अदर प्लेस, यू कैन ओनली वॉच इट ऑन प्राइम वीडियो, राइट? सो द होल टूर्नामेंट हैज बीन सोल्ड on the basis of India versus Pakistan. Let's be very clear. Now you don't have Bangladesh, right? Which means सबसे ज्यादा व्यूअरशिप 3 जगह से आती है, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश. These 3 countries contribute maybe 85 to 90% of the viewership, right? बाकी के 10% या maybe 80% of the viewership. बाकी के 20% में से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड might be contributing 10 to 11% of the viewership, and New Zealand and other countries will form 5 to 6% of the viewership. तो ऑलरेडी आपने 80% में से 10-15% तो निकाल ही दिया because Bangladesh is not playing the World Cup, right? And it's not going to be telecast in Bangladesh, right? It's very clear it's not going to be telecast in Bangladesh, which means आपकी वहां की रेवेन्यू चली गई ऑलरेडी. नाउ यू आर सेइंग कि इंडिया और पाकिस्तान की मैच नहीं होगा, okay? That means the money that's going to come to ICC is going to be a lot lesser, which means lot less funds will go into the game, which is not going to help any of the associate nations. It's not going to help Pakistan. It's not going to help any other country that is dependent on ICC for funds, right? This is one side of the divide. हो सकता है कि जब जियो हॉटस्टार, again I'm sure the contract is framed in such a way कि अभी तो जियो हॉटस्टार शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, but already there will be pressure from the broadcasters, including Prime Video, on ICC saying this is a big loss for us because like the amount of ad revenue you get out of an India Pakistan की जो slot होती है is very different when another team plays India or other teams play. 40 lakh Indian rupees for 10 seconds. Correct. So now you think of it. Now from Jio Hotstar's perspective, this is a big loss. It's a big loss for Prime. I'm sure Prime is also selling similar slots, right?
तो ये सिनारियो में देयर बी प्रेशर फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर. दूसरा क्या हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए डिस्कशन होगा, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट द एनीबडी हु इज नेगोशिएटिंग विल पुट अ क्लॉज which will say कि अगर मेन मार्की मैचेस बिटवीन इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है in a world tournament, then you have to pay much less money. Right? Now this might be negotiated in the contract. This is the third issue. The fourth issue is आपने क्रिकेट को ओलंपिक्स में 2028 में आप खेलने वाले हो. इन द ओलंपिक्स दैट्स गोना हैपन इन द अमेरिका, राइट? अमेरिका में जो यूएसए में होने वाली है, उसके लिए आपने क्रिकेट को एक्सपोर्ट डाला है. कैन यू डू द सेम jugglery when you go to the Olympics? The Olympics might not accept you at all. So you are putting a lot of things. ये एक one match नहीं है राहुल. This is not a match between India versus Pakistan that can get cancelled. This has implications to how cricket is run, how cricket is perceived as a sport when it has to go to other countries. So इसकी issue is not a India versus Pakistan political problem, or it's not an India versus Pakistan cricket board problem. This is a major problem. So if India and Pakistan की games नहीं होती हैं, so revenue नहीं आएगी. What are we saying about the future? Tomorrow there'll be another tournament where India and Pakistan might be part of it, right? Are we saying कि any future tournament India will not play Pakistan and Pakistan will not play India? Now that is a very big decision, right? Because that has implications. So I hope, as a cricket fan, forgetting all other things, we are all cricket fans, right? We are all cricket enthusiasts. We are not here talking about India or Pakistan. We are not politicians. We are not talking about politics. We are here to talk about cricket. Definitely that game has to go through. It does not matter what. I hope the ICC and PCB and BCCI and the Pakistan government and the Indian government work out a way to ensure that this game goes through and there are future matches at least in neutral venues. I totally understand bilateral series. That is purely dependent on political situation. We understand that. I mean, you want to keep sport out of all politics, but in reality, it doesn't happen like that. So that is completely different. But multi-nation tournaments, you cannot say that I will not play A squad or B squad. Or you cannot say that because I don't like to play that squad in that particular country, make some arrangement so that I can play in another country. Because you are making it difficult for other people. The other countries are at a disadvantage when you make an arrangement like how ICC has done now. So all in all, I hope that this gets resolved and we do have an India-Pakistan game. I am hopeful that it will be India-Pakistan on the 15th and it's not going to get अनूप, cancelled. इसी से कनेक्टिंग एक और चीज, मान लीजिए अगर ये चीज नहीं होती है, अगर गेम नहीं हो पाता है, तो इसके इम्प्लीकेशन पाकिस्तान क्रिकेट पे कितने ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि अगर मैं देखूं बहुत ज्यादा कि होगा. 2009 के बाद में जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, ऑलमोस्ट 10-11 साल पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई. आज के समय में जो पाकिस्तान की टीम में है, लगभग वही लोग उस समय टीनेज में रहे होंगे, अपनी क्रिकेट की शुरुआत कर रहे होंगे. मतलब उन लोगों ने अपना जो क्रिकेटिंग सफर है वो पाकिस्तान में बिना इंटरनेशनल क्रिकेट होते हुए देखा. And that is the impact you are seeing, Rahul. The Pakistan Exactly. team is not doing great is because of the fact that there are other issues that we all know. But definitely that fact that there was no cricket between 2009 to whatever years, 10 to 11 years, has had an impact on the next generation of cricketers who played for Pakistan. They are not at the same level as Imran Khan or Wasim Akram or Aqib Javed, the people that we know, right? Because there has been no cricket. Their stadiums have gone for a toss. If you see a lot of their stadiums, they all went for a toss because there was no cricket except local cricket. So there are big implications if this game doesn't go through, and let's say that the boycott happens, because then it's quite possible that the ICC might take some serious action, because they might say we will now put our foot down, right? Then what happens in that scenario? Like the cricket world has already got only 10 countries playing, right? इसमें से already Zimbabwe political issue की वजह से hardly खेलता है, right? Political whatever other issues. South Africa usually play mostly, like very less test cricket. They play mostly, like white ball cricket only. Due to funding and other related issues, we see a lot less test cricket. अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी तू मैं हो गया. अब आप बोलते हो कि पाकिस्तान के साथ भी तू मैं हो गया, तो बचता कौन है भाई खेलने के लिए?
क्या सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही 4 टीम बचे हैं क्या कि उनके बीच में खेलते रहेंगे क्या? So it has big implications if this issue is not resolved in a proper fashion, not just for now, but for future. You are looking at probably cricket going out as a sport to be considered by other countries. Right. Because you are not anyway helping the associate nations. They're only playing in tournaments like this. You are not getting them aboard. And now you have a problem with almost 3 major Asian teams. Not only this, now what happens to ACC, Asian Cricket Council? Asian Cricket Council में mainly 4 team है, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. There are other associate nations, but these are the 4 main teams. उसमें से तो already India, Pakistan और बांग्लादेश की झगड़े चल रही है अभी. तो बचता क्या है? सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान खेलेंगे या पाकिस्तान और अफगानिस्तान खेलेंगे क्या फिर? I'm just asking. What will be Asia Cup in some time? There might be no more ACC. That's not good for cricket, Rahul. अगर मैं आपको 2 मिनट और लूं तो मैं आपको ये बताऊं, बहुत साल पहले जब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इंडिया and all, they were not at the top of the ICC's, money chunk. There used to be always this complaint कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो बोर्ड्स हैं, they run the show, right? तभी जगमोहन दालमिया, if I remember correctly, formed the concept of where the Asian countries came together and positioned themselves as one unit, and that's how you were able to get a lot of things done at ICC, because always the Asian bloc used to be together, which means that other countries had to listen to them. Now it might happen that India might go into it might be harmful for India as well, because हो सकता है कि now Pakistan and Bangladesh might join hands in any of the next ICC meetings. It might be always possible that two countries are joining hands. Now it's quite possible that a third country might also join, saying that अरे यहाँ पे कहाँ पे unity है, why don't you go and join this? Now that will have implications for India as well. We all forget कि इसमें अगर आपको लगता है कि इंडिया के इसमें कोई भी लॉस नहीं है, like we have enough, we have IPL, we have lots of tournaments. Let's be very clear. All of this happens because you get in the moolah. And a lot of the moolah comes from India versus Pakistan games as well. IPL earns you a lot of money, but it does not mean that the next broadcaster is going to say कि सिर्फ IPL में मैं आपको सारा पैसा लेके दे दूंगा, they are going to be happy. No. It has implications for India. It has implications, much bigger implications for Pakistan, much bigger implications from a world cricket perspective. It has implications on ICC. It has implications on ACC. So it is just not about one India versus Pakistan game not happening on the 15th. You got to take into account every other implication. So hopefully better sense prevails, I will say. I will just say that better sense prevails and there is a solution that is found, and a permanent solution, so that next time when the tournament happens, there is no question whether India and Pakistan will play. Either we make a decision that India and Pakistan will not play, or India and Pakistan will play with whatever agreed rules and regulations, and no government can come in between, be it from India or Pakistan, and say that no, you can't do it. Until there is a very expensive scenario, like war chal rahi hai, to ho sakta hai. But if in peacetime, it's peace at this point of time, there is no ongoing ready war. So on peace times, there is a clear agreement.